Sandalwood's murder most foul. Chilling proof of brutality. Electrocuted, thrashed and tortured. Clinching evidence against actor Darshan. Night of Renuka Swami murder pieced together. Renuka Swami's parents demand justice. Sandalwood murder probe. Hello and welcome. Good evening. You're watching 6 p.m. Prime here on India Today. I'm Akshata Nandagopal and we're going to be getting you all the details that have emerged in the Renuka Swami murder case. A fan who was murdered by actor Darshan and all of his aides. This is a story that, of course, rocked Karnataka months ago. Today, we've got more details based on the evidence that cops have collected, including pictures of the victim begging for his life. We'll get you details of exactly what happened to Renuka Swami, as all the images we've used has pieced together exactly what happened on the day that he was murdered by Darshan and his henchmen. Let's begin with the headlines. Abhaya parents claim cops offered bid to cover up crime. Trinamool Congress counters with old video of parents denying bribe allegations. Chilling images nail Kannada actor Darshan. Murder victim Renuka Swami's images found in another accused's phone. He pleaded for his life before being electrocuted to death. Supreme Court reserves Kejriwal's bail order play. Delhi Chief Minister seeks bail in CBI Liquorgate case. CBI opposer says Kejriwal has a big role to play in excise policy scam. Shimla Mosque triggers big showdown. Protests erupt as Himachal Mantri objects to mosque, saying it's an illegal construction. Owaisi slams Congress government. Prime Minister Narendra Modi wraps up Singapore tour. Mega semiconductor deal signed. Prime Minister urges Singapore to invest more in India. And Bangladesh caretaker Prime Minister Mohammad Yunus triggers controversies. His attack on Hindu minorities has been exaggerated. Claims issue is not communal. Details have come out in the last 24 hours as to exactly how the murder of Renuka Swami took place. And it was shocking, really, to see the level of torture meted out by actor Darshan and his aides. And now, even as those details have emerged, we've accessed the first images. We've accessed the first images of actor Darshan there at the Bellary jail. And remember that it's just been days since Darshan has been moved to Bellary from Bengaluru. Sagai Raj is joining us with more details on this. Sagai, we understand that Darshan's wife met with him today. And there are, of course, questions about what kind of treatment he's getting in the Bellary jail. Amid that, these pictures have come to the fore, being escorted by cops. He's in under trial, so allowed in his own clothes, making his way perhaps to meet with his wife in the Bellary jail. So his wife Vijayalakshmi met today after 5 days in Bellary prison with a document in her hand. So a lot of questions which have been raised, whether it is the document for from Vijayalakshmi to get a signature from him to go ahead and apply for a bail play, or whether it is some other document. So far there is no clarity on that, but today we have seen Vijayalakshmi at Bellary prison visiting Darshan and talking about the VIP treatment after Parapanagrahara prison irregularities. The police as well as the government have taken cognizance of it, and there are
are stringent laws, rules which has been imposed against all the officers. In fact, none of them even can use mobile phones inside the premises of Ballari prison, and whoever wants to make any kind of phone calls, they have to use landline, and that too at a designated place inside the office of police personnel. So when there are no facilities for police personnel, it is quite obvious that even the prisoners might not get. And on the other note, what we also get to learn is that Darshan has already requested through his lawyer for a surgical chair, where he said that he's unable to sit inside the prison because even there are Indian toilets and it is difficult for him to use the toilet. So he has requested for a surgical chair, and according to prison manual, it has been allowed, but still it has been discussed inside the prison whether to give a surgical chair to Darshan. So as of now, nothing seems to be out of control as of now by the police. Everything seems to be under control. The police have taken cognizance of whatever the irregularities happened inside Parapanagara prison and been cautioned here in Ballari prison. Okay, Sagai, I request you to stay with me, because even as Darshan is exploring what legal options he has now in the Ballari jail, first footage of that on your screens as well, let's talk about really the details that have emerged of the crime, of the murder of Renukaswamy. Here's the chilling proof that we have of the brutality that Renukaswamy was made to undergo before he was killed. And sticking to news from Karnataka, you remember the hijab controversy that had played out a few years ago in the state when the BJP was in power? But it's back in focus right now because the principal of that particular college was to be awarded a Best Principal Award. B.J. Ramakrishna was the principal when the entire hijab controversy had played out in 2021. The controversy now is that the Siddaramaiah government has actually denied the award to this principal. The SDPI piled up pressure on the Karnataka government for honouring this principal, B.J. Ramakrishna, accusing him of creating a communal divide, accusing him of targeting Muslims. The SDPI, as a result of that, also, in fact, kept urging the Siddaramaiah government to withdraw this award. And what you've seen as a result of this pressure is the Congress government buckling and saying that no, he will not be given this particular Best Principal Award. Now, the Congress in its defense has said that it's because the principal has been accused of misbehaving with students. The BJP, on the other hand, has said that the Karnataka government is disrespecting teachers and has accused them of giving in to political pressure from the SDPI. Let's get you some political reactions. After announcing the award, there was a question which arose that when the government order was supposed to be followed, his behavior towards the towards the student. So I just told them to check and get back to us. That is the reason it has been withheld. So, see, actually what is happening in Karnataka, SDPI and these communists are controlling this government. This is not Congress government. SDPI, a leftist government. Because they wanted to please them for the vote bank purpose. So that they are doing all these things. The whole world is changing. Even the Islamic countries are changing. They are changing their laws regarding hijab and everything. This being a case, here a government denies an award. In fact, the act of this government has brought down the value and importance of that award. So I urge Chief Minister to intervene and see that award is restored to the principal. Otherwise, the whole state will stand against it. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ, ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ
ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಗೌರವ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ, ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. So why exactly did the SDPI seek that this award not be given to this principal? Did they meet with anyone in the Siddaramaiah government and express that they don't want this award to be handed over to the principal? I spoke to the SDPI Karnataka General Secretary about this entire issue. Listen into the conversation. Mr. Afsar, first of all, explain to us why were you against Mr. Ramakrishna getting the Best Principal Award? देखिए, जब कर्नाटक में सबसे पहले ये हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू करने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो यही प्रिंसिपल का आता है, जो रामकृष्णा नाम का जो प्रिंसिपल है। कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट में जो कुंदापुर एक गवर्नमेंट कॉलेज में ये बच्चियों को कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के अंदर आने से रोका हुआ एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल की ड्यूटी शुरू होती है कॉलेज कैंपस के अंदर। ये कॉलेज कैंपस के बाहर आके गेट में, जैसा कि एक वॉचमैन आके गेट में कोई दूसरों को रोकता है, वैसा रोकने की जरूरत तो क्या थी? आप ये मान रहे हैं कि अगर अंदर आते हैं तो फिर कॉलेज के रूल्स अप्लाई होते हैं, तो गेट से अगर अंदर आ गया तो फिर कॉलेज के कैंपस में ही होगा ना? जी मैडम, गेट के रूल्स के अंदर, गेट के अंदर आने के लिए वो लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहन रखा था। कोई यूनिफॉर्म पहने बगैर वो लड़कियां नहीं आए थे, यूनिफॉर्म पहनकर वो आए थे कॉलेज को। तो ये जो गेट से बाहर रोकने की जरूरत क्या थी? अगर ये प्रिंसिपल सही में अपनी ड्यूटी सही निभा के रहते तो उनको अंदर आने देते, अपने चेंबर में बिठाते। अगर उन्होंने कोई यूनिफॉर्म के रूल्स को ब्रेक किया है तो उनको उसको कन्विंस करते, उसके बाद सही बात हो सकती थी। इन्होंने गेट के बाहर रोका। इतना ही नहीं, ये तो बताने के लिए मीडिया में आया बात है, लेकिन वहां पर जो बीजेपी का एमएलए था, जो रघुपति भट्ट, उसके इशारों पर ये चल रहे थे। एक प्रिंसिपल, ये सब एलिगेशंस है, ये इसका कुछ मतलब अगर जांच हुआ और कंफर्म हुआ तो फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो बस रूल्स फॉलो कर रहा था। अफसर जी, अगर रूल्स बताते हैं कि यूनिफॉर्म चाहिए तो फिर गेट पे बंद करेंगे, बोल देंगे कि अंदर नहीं आ सकते जब तक आप यूनिफॉर्म पहनते हो। जी मैडम, वही प्रिंसिपल का वर्जन है। प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैडम रूल्स क्या था ये तो बताइए थोड़ा मुझे। तब रूल्स क्या था कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। पहन के आना। जी, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन के आना था। यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया था क्या है क्या उधर? बच्चियां यूनिफॉर्म बिल्कुल पहने हुई थी। तो गेट में आके रोकने का रूल्स इसको गवर्नमेंट से कोई भेजे थे क्या, कोई ऑर्डर? बच्चों को गेट के अंदर भी आने नहीं देना बोल के कहाँ था रूल्स? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं रूल्स में रूल्स अफसर जी, मैं रूल्स क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ रूल ये है कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। फुटेज में यूनिफॉर्म में नहीं है तो फिर कौन बोले? फुटेज में देखिए आप, फुटेज में देखिए आप। वही कंट्रोवर्सी था कॉलेज में। क्या कंट्रोवर्सी था कॉलेज में? ये रूल लेकर आया था कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो क्या प्रिंसिपल ये रूल को सिर्फ एनफोर्स कर रहा था? मैडम, यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिए, ये इश्यू क्यों, ये कंट्रोवर्सी बोल के आप क्यों बोल रहे हैं? इसको स्टेट अवार्ड देने की वजह से कंट्रोवर्सी हुआ ना। तो यही सिद्धरामैया हुकूमत जब गवर्नमेंट में नहीं थी, अपोजिशन रोल में थी, इन्होंने पूरे कर्नाटक के लोगों से वादा किया था अगर हम हुकूमत में आएंगे, एंटी माइनॉरिटी, एंटी SC ST दलित OBC के ऊपर पॉलिसी जो बीजेपी लाई है उसको हम विड्रॉ करेंगे। और यही सिद्धरामैया सीएम बनने के बाद भी मैसूर के एक प्रोग्राम में खुद अपने मुंह से एक बयान दिया था, आज के बाद कोई हिजाब के ऊपर पाबंदी नहीं रहेगी। हिजाब का जो पाबंदी बीजेपी हुकूमत लगाई थी उसको हम विड्रॉ किए हैं। लेकिन विथिन 24 आवर्स ये यूटर्न मारते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के IT सेल के प्रोपेगेंडा को डर कर अपने स्टेटमेंट से ये पीछे हो जाते हैं। तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट से हमारा सवाल है, इतना कंट्रोवर्शियल करने वाले प्रिंसिपल ही मिला कि आपको स्टेट अवार्ड देने के लिए? नहीं अफसर जी, आप एक चीज मेरे को बताइए, आप बार बार बीजेपी बोल रहे हो, क्या ये पॉलिटिकल इश्यू है? क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है? प्रिंसिपल, इसके पीछे पॉलिटिक्स अगर एक प्रिंसिपल को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिल रहा है तो उसमें राजनीति और पॉलिटिक्स क्या है? वही हम पूछना चाह रहे हैं।
इससे एक कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल को अवार्ड देने के पीछे जो मूडा का इंसिडेंट, जो सीएम सिद्धरामैया के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन आया है, वो इश्यू को डाइवर्ट करने कुछ ऐसा लेके आए हैं क्या, बोल के भी हमें डाउट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं मिला क्या? दूसरों को देने के दे सकते थे ना। इससे ही प्रिंसिपल को चुनने के पीछे क्या साजिश छुपी हुई है? इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले जुले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जो पीपल अगेंस्ट जो स्टूडेंट के खिलाफ ये लॉ लाया था, सिद्धरामैया खुद बोले थे इसको विड्रॉ करते हैं, क्यों विड्रॉ नहीं किए? हमारा सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप तो बोल रहे हो बीजेपी और कांग्रेस जुड़े हैं, लेकिन आज तो ये न्यूज और खबर आ रहा है कि सिद्धरामैया सरकार ने इसको रोक लिया। जी, रोका कब? यही सवाल है, क्यों रोका, कब रोका? तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जब एसडीपी जैसे दूसरे दिगर लोगों ने इसको अपोज किया, तब जाके इसको विच्छेद किया। पहले क्यों सेलेक्ट किया? अभी क्यों रोका? यही पॉलिटिक्स बोल रहे हैं ना हम, इसके पीछे यही पॉलिटिक्स छुपी हुई है। तो आप ये बताइए कि क्यों रोका? क्या एसडीपीआई ने जाकर सिद्धरामैया सरकार से रिप्रेजेंटेटिव से मिला था और उसके बाद ये हुआ? जी, एसडीपी ने किसी से जाके नहीं मिला। एसडीपी के सभी लीडर्स, मैं खुद एक ट्वीट किया था सिद्धरामैया को टैग कर, अगर आप इस तरीके से एक कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल को आप अवार्ड दे सकते हैं, तो कल का दिन ये भी हो सकता है जो मुस्लिम औरतों के बारे में अनाप शनाप कहने वाले कलर के प्रवक्ता के बारे में जो एक इंसिडेंट होकर एक केस चल रहा है, यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट का ये दौर में उसको कल जाकर कम्युनल हार्मनी का अवार्ड भी दे सकते हैं तुम। ये मैं सवाल किया था सिद्धरामैया को, और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बी.आर. भास्कर प्रसाद ने एक स्टेटमेंट भी दिए थे। ये जो इंसिडेंट है, जो पिछताई ताकतों की जो सोच है, वो सोच को कांग्रेस आगे बढ़ाते हुए लेके चले जा रही है। नहीं तो आपको अफसर जी, आपको लगता है कि जो प्रिंसिपल वहां पे उनके काम कर रहा था, रूल्स को एनफोर्स कर रहा था, वो हिंदू मुस्लिम के बात के ऊपर इन स्टूडेंट्स को बाहर रोका था? क्योंकि वो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, बाहर रोका था, आपको लगता है? यस, वो मुस्लिम स्टूडेंट है, इसलिए ही बाहर रोका था उन्होंने। क्योंकि अगर वो एक प्रिंसिपल होते, सभी धर्म के मानने वाले वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई हिंदू वहां पर के अपना तिलक लगाकर अपने कल्चर के हिसाब से स्कूल खोलते हैं, तो उनको गेट में क्यों नहीं रोका? हम रोको बोल के नहीं रोकते प्रिंसिपल को, सिर्फ मुस्लिम बच्चों को क्यों रोका गेट में? यही हमारा सवाल है। ओके, तो आप अफसर जी, आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हो कि प्रिंसिपल टारगेटेड मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे बिलीव दैट ही शुडंट बी गिवन द अवार्ड। अफसर जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यू हैव हर्ड फ्रॉम द एसडीपीआई देयर, दे मेंटेन दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर दैट यू हैव द सिद्धरामैया गवर्नमेंट टुडे टेकिंग दैट स्टेप ऑफ नॉट गिविंग दिस प्रिंसिपल द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड. Over 25 days since the rape and murder of Abhaya, and more details, explosive allegations come to the fore on the cover-up and conspiracy by both the hospital and the authorities. On one hand, you have Abhaya's parents, who were a part of the protest last night, accusing a senior police officer of attempting to bribe them, essentially attempting to suppress the case by hurriedly cremating the body of their daughter after the rape and murder came to light. And on the other, Dr. Sandeep Ghosh, who's been arrested by the CBI, had shot off a letter seeking renovation to take place right next to the crime scene a day after the crime took place. Outrage over RG Kar Hospital rape and murder mounts as new allegations come to light. Participating in the protests seeking justice for Abhaya, the parents accused a senior police officer of trying to bribe them after the incident came to light. আমার মেয়ে দেবো আমার ঘরের সাইডে ছিল, তখন ডিসি নট আমাদের ঘরের একটা গলিতে ঢুকে ঘরের ভেতরে তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। The TMC denied the charge. যদি তাদেরকে টাকা পয়সা দেয়া হয়েছিল ইত্যাদি, পুলিশ দিয়েছিল, ধামা চাপা দেওয়ার জন্য, এরকম একটা ভিডিও যাচ্ছিল। তার পাশে আবার আরেকটা ভিডিও এসছে যেখানে বাবা মারাও
এইরকম একটা অভিযোগটাকে অসত্য বললেন এবং তারা বললেন এটা মিথ্যা। আমরা কিন্তু আমাদের মেয়ের জন্যে একেবারেই তাড়াতাড়ি যে মেয়ে আমাদের মধ্যে নেই তার জন্য বিচার চাই। TMC even posted an old video of parents where they call bribe charges a lie. একটা প্রচার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ প্রশাসন থেকে নাকি আপনাদের কোনো আর্থিক টাকা নিয়ে এসে দিয়ে কে বললো এই কথা? ধামাচাপা কিভাবে বললো এটা? এইটাই তো হচ্ছে টিভিতে কিভাবে বললো? আপনার আমাদের এই সম্মেলনের কথা বলার কোনো দরকারই প্রয়োজন কি আছে? এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ছি ছি ছি, আমরা কাউকে কিছুই বলিনি। তাহলে এটা পুরো সম্পূর্ণ একদম মিথ্যা গল্প। হ্যাঁ, মিথ্যা গল্প বানিয়ে একটা বিষয়বস্তু শুরু করেছে। India Today has accessed a letter revealing that the hospital's principal ordered renovations near the site of the crime, fueling suspicions on a calculated cover-up. On Wednesday, anger boiled over as hundreds took to the streets, switching off their lights in a symbolic protest. West Bengal Governor C.V. Ananda Bose joined the protest by switching off Raj Bhavan's lights and lighting a candle in solidarity. In Cooch Behar, violence erupted during the Reclaim the Night protest. Clashes broke out when a protester was allegedly assaulted by Trinamool Congress workers, triggering a police crackdown. Thirteen protesters, including women, have been arrested. Police have been deployed across Cooch Behar to maintain peace. Bureau Report, India Today. Let's bring in Suryagni Roy for more details on this. Suryagni, on one hand, you have the parents alleging last night that there were attempts to bribe them. The Trinamool Congress, in response, has put out an old, undated video in which the parents are heard saying there was no attempt to bribe us. But even as you're seeing this back and forth, and unfortunately the Trinamool Congress even choosing now to question the parents' version, is there any attempt to actually investigate what Abhaya's parents have alleged here? Well, Akshita, yesterday when we were at Arjikor and, the protests were happening, the symbolic protests were happening, the parents of Abhaya were present over there. That is where the father, when he was speaking, he stated that on that fateful night when the deceased's body had already reached the residence of the family, he named DC North Kolkata Police, Deputy Commissioner North Kolkata Police, had allegedly, wanted to give them some money. Now the question was that why was that money being offered, or what was the reason of, giving that money to them? But, that clarity is still not there. The parents never spoke on it as of now. Secondly, this allegation, when it came out, it was a major shocker. And since today morning, a video was extremely viral of the family where, they were stating that no such offer was given to them by the Kolkata police. That's the mother and the father I'm talking about. Now, when we tried to verify the video, we realized that, it's from mid-August. Sometime in the afternoon, the Trinamool Congress did a PC wherein, they said that their hearts are all out for the family. They do not want to comment on any of the allegations that the family has made. However, they stated that even this particular video is also out on social media, where the family is claiming that no such offer was made to them, and it's completely bizarre. So there are these two, claims by the same parents. Now, as you've mentioned that, it's the CBI who's investigating this particular case, and now they have to see which one of the claim is actually correct. Back to you. Absolutely. The need of the hour, no doubt, is for an investigation into these claims, because if they're true, extremely serious and truly incriminates the Kolkata police for a cover-up. Thanks very much, Suryagni, for joining us with those details. The other aspect of really the attempt to cover up, or the alleged attempt to cover up, is on the part of the Arjikor Hospital. And we've been telling you that here on the India Today, especially details of how there were attempts to float the suicide theory with the parents. Now we've accessed a letter which confirms that Dr. Sandeep
Ghosh also ordered the renovation of the hospital a day after the rape and murder took place, which thereby essentially ensured that the entire area is tampered with, compromised. What was the tearing hurry for this renovation? So let's run you through the string of allegations against Dr. Sandeep Ghosh and why there are serious allegations against him of attempting a cover-up. First, as I've mentioned, he approved renovation near the crime scene on August 10th, shooting off a letter to the Public Works Department saying there's urgent work that needs to be done. At a time when a crime like this has taken place just right next to the renovation site. He, of course, peddled the suicide theory to Abhaya's parents, claimed to them via the assistant superintendent that their daughter had perhaps in all likelihood died by suicide. And obviously, again, the hospital administration will be pulled up for that. He was the principal. Didn't communicate at any point, didn't even bother meeting Abhaya's parents while they were in the hospital. He is the principal of RJ Kaur when the incident took place. At no point did he meet with them, and Abhaya's parents have confirmed this too, that they were kept waiting and there was no sort of attempt by Dr. Ghosh to meet with them. But beyond this also, there's also an accusation that the principal, Dr. Sandeep Ghosh, at that point, delayed informing cops after the body was found. And this led to questions about what really happened in that time frame, from when the body was found to when the cops were informed. What was the hospital administration attempting to do? What was Ghosh trying to cover up? He's been accused also of several corruption cases and running a racket in the hospital, particularly with unclaimed dead bodies in the mortuary of the RJ Kaur hospital. He's been accused of selling those as well. And then there's the allegation of financial misconduct during his tenure as principal, of accepting bribes even from students for going ahead and helping them pass. And this is something that Abhaya's parents have also spoken of, saying that she knew about this kind of a racket taking place. The CBI, of course, has arrested him in these cases of financial misconduct and all the details that have come in on the disproportionate assets that he seems to have gained while being the principal of the RJ Kaur hospital. Let's get your breaking news coming in. All right, let's get you the latest statement that's come in from the Bengal governor in the Kolkata rape case. Now, even as Abhaya's parents have now alleged that there was attempts to bribe them, the governor has said that the parents, when they spoke to gave me shocking, heartbreaking details. The governor has said that I've also passed them on to the central government. I've told the Home Minister about the parents' allegations and what the parents have told me. He's also pulled up the Bengal government, saying that clearly the Bengal cops are corrupt, they're politicized, there must be action. The law is there, but there's no proper implementation of it on ground. Let's play out for you what, in fact, the governor, C.V. Ananda Bose, has said. Raging controversy in Himachal, in Shimla, over the construction of a mosque, which a Himachal minister, part of the government, has deemed as an illegal construction. There were massive protests that also took place in Shimla as a result. They gathered outside the Sanjoli Masjid, and there were massive protests demanding that this illegal construction be immediately razed down. And these protests come hours after Himachal Minister Anirudh Singh had criticized the construction of what he calls an illegal mosque, citing safety concerns, and even talking about love jihad and theft. But even as Anirudh Singh has said this, there will be questions about then who granted permission for the construction of this mosque, considering that he is in government. Asaduddin Owaisi has lashed out at the Himachal government, questioning whether they're now, the Congress government in Himachal, whether they're aligned with the BJP's rhetoric. So even as this entire controversy has been kicked off by a Himachal minister, by a minister in the Sukhu cabinet, Chief Minister Sukhu has blamed the BJP. We've spoken to him exclusively here on India Today, where he says that BJP is politicizing the issue. Law and order, he's also assured, is intact. Let's play out for you that exclusive conversation. शिमला में मस्जिद निर्माण पर विवाद है, कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की मांग है और साथ साथ इस समय हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सर, ये जो इशू खासकर क्योंकि हिंदू संगठन में आक्रोश है, इस इशू को आप कैसे देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है
किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई विरोध प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करता है और कानून के दायरे में विरोध प्रदर्शन करता है, ऐसा अधिकार देश लोकतंत्र में होता है। मेरा मानना कि इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। और इस प्रकार की बात हम मीडिया से के द्वारा ज़्यादा उछाली ना जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में कई बार भावनात्मक रूप में कोई ना कोई बात हो जाती है, लेकिन ऐसी बात हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। डिमोलिश करने की मांग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 190 से 1900 हो गए, उनकी वेरिफिकेशन हो, बांग्लादेश या दूसरे जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो यहाँ पर आ गए हैं, मतलब सरकार के मंत्री ने नहीं, अभी तो हमारा ऐसा है कि नहीं, सरकार के मंत्री ने अब दोबारा बयान दिया है। अब वो जो सरकार के, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे सभी समुदाय के लोगों का सम्मान करना है और जहाँ गलत है वहाँ गलत होगा, जहाँ सही है वहाँ सही होगा, लेकिन कानून व्यवस्था हम बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देंगे और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत हमारी सरकार नहीं देगी।